Hey guys, welcome back to my channel once again. And today we will be doing chapter number 13, whistleblowing. So, what is really happening? मैंने last video में chapter number 9 cover किया and I will be covering chapter number 10 in a short while. But I will not be covering 11 and 12 because I have already covered in one of my videos. So, अगर आपको वो chapters का मतलब समझना है, those are very basic chapters. But still you want to watch videos for those two chapters, they are covered under FOI playlist. Okay, go and watch them. In case you further need my assistance in anything, please let me know. I have directly come on to the chapter number 13 for that particular reason. Now, after 13, I am planning to cover failures in every next video. Okay, so हम एक एक वीडियो में एक एक फेलियर कवर करेंगे इन डिटेल बिकॉज दैट्स द मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो हम सबको बहुत डिफिकल्ट एंड बोरिंग लगता है टू रीड बाय योरसेल्फ. ओके, तो विसल ब्लोइंग के बाद विसल ब्लोइंग में चलो ये स्टार्ट करते हैं. बाकी की कहानियां मैं तुम्हें बताती रहूंगी चैप्टर के साथ साथ. Okay, so these are the topics that we will be covering in our chapter. Okay, meaning, advantages, will it be morally justified? Is it not? Or how to, how a company makes a policies. These two things I am not covering. Okay, reason number one, policy. देखो, जब भी पॉलिसी आती है, विसल ब्लोइंग पॉलिसी, हमेशा एग्जामिनर तुमसे पहले उसका मतलब पूछता है एंड देन एक सब एक क्वेश्चन पूछता है उसी के साथ में कि कंपनी क्या करे इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिचुएशन. तो जिस एक्सटेंट में ये पॉलिसी बुक्स में दी हुई है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड इन केस यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड, गो अहेड एंड रीड देम. Cases in India, again, the reason I'm not covering this particular topic is that because हमारे जो failures आते हैं, that is ऑफ योर कॉर्पोरेट फेलियर्स, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं. बट विसल ब्लोइंग का फेलियर कोई तुमसे पूछे कि कैसे हुआ, व्हाट वर द केसेस इन इंडिया, दिस इज मोस्ट अनलाइकली टू कम इन द एग्जाम. सो जो पेपर में आ सकता है हम वो ही कवर करेंगे इंस्टेड ऑफ कवरिंग दोज टॉपिक्स जो थोड़े आने के कम चांसेस है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं आएंगे, वो आ सकते हैं. प्लीज डू नॉट अवॉइड देम कम्प्लीटली, गो एंड जस्ट रीड इट वंस. तुम्हें एटलीस्ट ये सब रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स माई प्रॉमिस. ओके, तो तुम्हारे पास इन शॉर्ट चैप्टर 13 में सिर्फ 3 ही चीजें रीड करने को है. ओके, सो इन केस यू वांट इट यू कैन रीड इट, बट दिस इज मोस्ट अनलाइकली टू कम फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग. रेस्ट योर चॉइस. नाउ लेट्स कवर द मीनिंग. एंड इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं एनिमेशन डालना भूल गई हूँ इस पर्टिकुलर पीपीटी में, बट ओके, टू सेव टाइम वी कैन गो एट. मीनिंग, अब क्या होता है, एक थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं. लेट्स सी, मेरी कंपनी में, आई नॉट टेक द नेम ऑफ माय कंपनी, कुछ गलत होता है, ठीक है. एंड मुझे पता चलता है कि यार साथ वाला कलीग मेरे साथ, मतलब नॉट मेरे साथ बट XYZ के साथ कुछ गलत कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज समथिंग इलीगल दैट इज एक्चुअली हैपनिंग और मे बी अनएथिकल, but nobody is informing. Why? Because she may be threatened, or I am ignoring, or some another person is ignoring. But today I make a decision कि यार मैं तो बताऊंगी, ठीक है. तो मैं ये हूँ, इन ये इसके साथ गलत कर रहा है. तो today I decided that yes, I will inform the organization about such illegal or unethical behavior. तो जब मैं ये बता रही हूँ तो दिस इज नोन एज विसल ब्लोइंग. तो विसल ब्लोइंग कब होती है? जब एक एम्प्लॉय, दैट वाज मी इन माय केस, इन्फॉर्म द पब्लिक, ठीक है. अब जरूरी नहीं है पब्लिक हो, यहाँ पे हम कंसर्न पर्सन भी लिख सकते हैं, दैट इज जिसको वो बात पता होनी चाहिए. मे बी टॉप मैनेजमेंट, मे बी एनी कमिटी, मे बी एक्सटर्नल कमिटीज, मे बी मीडिया, एनी पर्सन इन्वॉल्व, जो अप्रोप्रिएट पर्सन हो, कंसर्न पर्सन हो कि यार ये इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी हो रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है. नाउ व्हाट आर द फीचर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन इंडिविजुअल एक्ट. तो ये हम एक ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल. बट हम पूरे कंपनी की बात नहीं कर रहे यार ये कंपनी ने इस कंपनी के साथ गलत कर दिया, नो.
ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप और अ पर्सन, इंडिविजुअल। ठीक है, मैं इंसानों की बात कर रही हूँ। मोरल मोटिव ये की जाती है, वाई विसल ब्लोइंग इज डन, वाई आई एम सो कंसर्न अबाउट द थर्ड पर्सन, दैट यार मैं इसके बारे में रॉन्ग डूइंग करूंगी। वाई? मैं सेल्फिश हूँ? नहीं, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, बल्कि आई एम अ गुड पर्सन, आई वांट टू डू समथिंग गुड, आई वांट टू डू समथिंग पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्ग ह्यूमन, ह्यूमैनिटी के नेचर से, ह्यूमन वैल्यूज के नेचर से। अभी कुछ भी हो सकता है, चाहे मे बी करप्शन चल रहा हो, या क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही हो, या कोई मिसबिहेवियर चल रहा हो। सो दिस इज डन नॉट फॉर अ सेल्फिश मोटिव, बट फॉर बीन अ गुड डूइंग। रीजनेबल बिलीफ, मी द विसल ब्लोअर। जब भी मैं यहाँ पे मी कह रही हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल एंड आई एम कॉल्ड एज विसल ब्लोअर। ठीक है, मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी एक्टिविटी मैंने रिपोर्ट करी है दैट इज इन अप्रोप्रिएट। ओके, एंड इट इज वॉलेंट्री एक्ट, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, मुझे किसी ने आके नहीं बोला कि तुम उसकी कंप्लेन करो जाके, नॉट इवन कंप्लेन, टेल द कंसर्न पर्सन, दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग आउट ऑफ माई विश। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं हमेशा चाहूंगी कि यार अगर मैंने इतने एफर्ट्स, नॉट इवन एफर्ट्स लेके, बल्कि जब मैं कुछ रॉन्ग डूइंग की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो एटलीस्ट आई शुड गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आई शुड नॉट बी लाइक, चल जा, टाइम वेस्ट कर रही है, क्या बकवास है ये, क्या है ये, क्या। नो, it should have a positive response, they should hear me, they should do something about it. Okay, now there are different types of whistleblowing. Okay, नाम से ही पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होती है। कॉर्पोरेट, जो एक कंपनी में होती है। तो आई एम डिस्क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर मिसकंडक्ट on the part of company. Personal. What do you think the personal, whistleblowing would mean? जहाँ पे मैं एक्सप्लॉयटेशन या इमोरल बिहेवियर का डिस्क्लोजर कर रही हूँ टू पब्लिक और टू द एनी कंसर्न पर्सन। ठीक है, देन एक्सटर्नल, डिस्क्लोजर टू आउटसाइड एजेंसी। मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, आई नीड टू रिपोर्ट दिस टू एक्सटर्नल एजेंसी, तो आई एम डूइंग इट टू द मीडिया। ठीक है, मीडिया, आई डोंट नो शुड आई एक्चुअली डिस्क्लोज इट और नॉट, बट या इट इज डन। जब हम किसी अपनी कंपनी के बाहर किसी को रिपोर्ट करते हैं अबाउट सच रॉन्ग थिंग हैपनिंग इन माय कंपनी। इंटरनल, जब मैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से मैं स्टाफ हूँ, तो मैं टॉप मैनेजमेंट या कोई भी मेरी विसल ब्लोइंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी कमिटी या टॉप मैनेजमेंट को बताने के लिए जाऊंगी, तो दिस इज समथिंग दैट इज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप करती हूँ, दैट इज द एक्सटर्नल, and this is the corporate, because this is happening in a company. In case this is happening in the government company, this will become government whistleblowing. Now, what is the motives? Why whistleblowing is done? क्यों मेरे को इतनी चुल मची है कि मैं जाके सबके चिट्ठे खोलूं? क्या मुझे शौक चढ़ा? नो, दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग बिकॉज ऑफ एथिकल बिहेवियर। मुझे अच्छे से पाला गया है, मुझे बताया गया है कि आज अगर कुछ गलत होता है मेरे साथ या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ, तो आई विल रिपोर्ट इट। Highlight the danger. One of the reason behind whistleblowing is to shout out कि there is a possible danger. लेट्स से आज अगर कोई मेरी कंपनी बाहर तो बोल रही है कि मार्केट प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट बना रही है, बट इलीगली इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आई कैन सी that something very dangerous has been produced which is very harmful for my skin. ठीक है, तो आई कैन गो एंड शाउट इट आउट, डूड समथिंग इज हैपनिंग, हाईलाइटिंग थ्रेट टू द पब्लिक। ठीक है, अगेन जनरल पब्लिक को जाके डिफेक्टिव प्रोडक्ट, आई कैन टॉक अबाउट इट। Motivate towards morality. One of the motives of whistleblowing is to inspire the manager or government official कि तुम यार थोड़े एथिकल हो जाओ, थोड़ी इंसानियत अपने अंदर जगा लो। राइट, नाउ इज इट मोरली जस्टिफाइड? टेल मी, क्या मैं जाके किसी और के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में किसी और को रिपोर्ट कर सकती हूँ? यस,
I can do it, but it should not be done in the motive of taking revenge. मुझे किसी से बदला लेना है, मेरे को इसलिए नहीं करना, बट मुझे एक्चुअली मोरली मोरल उसके पीछे सही होना चाहिए. ओके, सो इट शुड बी डन फॉर द गुड thing, for your good behavior, and not for a purpose of taking revenge. When is it justified? Because you have good motive. Again, you do not want to take the revenge from any person. Breach of trust. Sorry, when it is unjustified. जब तुम्हारा पर्पस था कि मुझे रिवेंज लेना है, या तुमने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है, एंड देन तुम जाके डिस्क्लोजर करो, दिस इज समथिंग नॉट जस्टिफाइड. इंटरनल चैनल, कंपनी में एक इतनी अच्छी पॉलिसी बिल्ड हुई है, बट नहीं, हम तो जाके बाहर मीडिया को शाउट आउट करेंगे. नो, यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू फॉलो द इंटरनल पॉलिसी. सफिशिएंट एविडेंस. मेरे पास कुछ नहीं था एविडेंस के नाम पे, मैंने सिर्फ अपनी कानों से सुना, whisper ears, and then I go on and shout it out. Did I have the evidence? Did I have the evidence regarding this particular incident? Absolutely not. मेरे मन में जो हुआ मैंने कर दिया. Little chance of success. विसल ब्लोइंग जस्टिफाई नहीं होती जहां पे अनसर्टेन है कि ये कुछ गलत बिहेवियर को प्रिवेंट कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स से एवरीथिंग इज हैपनिंग लीगली, बट यू आर डिस्क्लोजिंग जस्ट फॉर द सेक कि यार मुझे गलत लग रहा है. नो, जस्ट चेक विद अनदर पर्सन इन्वॉल्व, कि नॉट इवन इन्वॉल्व, योर कलीग और समवन, टेक अ सजेशन, डूड, am I thinking that way? Am I wrong? Am I not? So what is the advantage of whistleblowing? First hand information. बाहर से आके एजेंसी रिसर्च करे, इससे बेटर है कोई मेरा अंदर का एम्प्लॉय बताए. इनसाइडर इंफॉर्मेशन, इफ यू हैव एवर हर्ड, इज ऑलवेज बेटर. अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. ठीक है, लेट्स से करप्शन, so that's a early warning. Correct. Deduct corrupt behavior. ठीक है, and protect honest employees. Now, what are the problems? Forthcoming problems. Why? Because you are breaking the unwritten code of silence. सब कुछ शांति से चलता जा रहा था, तुम आके उस शांति को भंग करने वाले हो. Discourage corrupt behavior. ओके, सो ऑफिशियली इनकरेज्ड विसल ब्लोइंग है, ठीक है, बट इट मे डिस्करेज करप्ट बिहेवियर, जिसकी वजह से इनिशिएटिव, विलिंगनेस टू बी बोल्ड, टू टेक अ क्विक डिसीजन विल गेट डिस्करेज्ड. ओके, ब्रेक्स अनरिटन, एज आई मेंशन, एंड यूज्ड टू ब्लैकमेल कलीग्स. तू कर रहा है, नहीं कर रहा, मैं कंप्लेन कर दूंगा तेरी विसल ब्लोइंग में. ओके, you know what, in few organization sometimes whistleblowing में पता है पॉलिसी में क्या होता है, that you can actually make a complaint unanimously. ठीक है, anonymously, not unanimously, sorry guys, anonymously. हाँ, कमेंट में मेरी झंड में तो उतारने लग जाना. ठीक है मतलब anonymously, without even telling your name, you can go and complain. Okay, so this is actually done in few of the organizations. So वहाँ पे हम थोड़ा ब्लैकमेल गेम खेलते हैं अपने कलीग्स के साथ, इसलिए this is something which is not promoted in every organization too. Nowadays, it has become, I guess, sort of compulsory for every organization, but till now, it it is not that. Now, what is the culture? How can top management make sure कि उनकी whistle blowing policy अच्छे से चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में? एक पॉलिसी बनाओ, हर एम्प्लॉय को बताओ. ये नहीं कि टॉप मैनेजमेंट अलग कहानी में चल रही है, तुम अलग डायरेक्शन में चल रहे हो. नो, दे शुड गो हैंड इन हैंड. दे शुड, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए. इफ अ एम्प्लॉय वांट टू मेक इट anonymously, they should be allowed. Okay, investigation and follow up. If a complaint is registered, you should actually go and investigate and take a follow up. What is the status of complaint? Did it actually happen? What was the proofs? What was the evidence? Did we actually do something about it, or did we just ignore? Okay, so that's it about whistleblowing. In case you know these topics
Trust me, they are more than enough for your exams. Again, in case your teacher has told you that ये भी important है, for example, the whistleblowing cases in India, then I am ready to cover it. No worries. Just write it down in the comment section. मैम ये भी cover करवा दो. Okay. I'll make all efforts to cover maximum syllabus, maximum important points. And I hope you liked my video. Please, please, please go and subscribe to my channel and share it with your friends. And I know I have made a lot of pronunciation mistake in this particular video because it's actually 11:30 p.m. and I am super tired after my office, but I took efforts to make video for you all. So I hope you don't mind these mistakes and you are more focused about your syllabus instead of my mistakes and you appreciate my efforts. So looking forward for all your responses. Thank you so much. Have a great day. All the best for your paper.